Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very huge good morning and Assalamu alaikum to all Pakistani viewers. Hopefully, you've got the PTV on. This is a great moment for Pakistan. This is an absolutely great moment for Multan, the city itself, and a spellbinding moment for Rumanza Golf and Country Club, and which includes, of course, when you talk of Rumanza Golf and Country Club, you have to mention Sir Nick Faldo. And for viewers who don't know about golf, Sir Nick Faldo is a known golf designer. And when he touches a golf course, it becomes a signature golf course. And of course, in order to understand what the name Nick Faldo means, it simply means excellence. Nick Faldo means excellence. And I can see him. He's all cheered up, and he's smiling. And hopefully, he's going to make this a golf course, a world class arena. And while we have many foreigners playing here, foreigners who are top class golfers, we have Nick Faldo, who stands out as a star of the morning and who is going to make this golf course look bright and tremendous indeed. And I can see Miss Ashma Shami here early in the morning, all made up. Not too many cosmetics, but lipstick I can see. Okay, ma'am. I can't help. When I see you, I can't help avoiding you. So, my dear Pakistanis, welcome to Romanza Golf and Country Club, and welcome to the start of the day's proceedings so early in the morning. And we have champions like Sir Nick Faldo are all prepared to tee off. And while he gets ready to tee off, I can see so many foreign faces. I can see Malaysians here. I can see people from. Haji? And as you see on the screen here, there is so much delight all around. I wonder if we can recognize a lot of faces here, all prominent by himself is Nick Faldo. And I wonder if we have the camera here and we can show this board here to the audience in Pakistan. यार इसको उठाओ जरा दिखाना अपने नाम of the opening flight. I can see the tournament director here, Zahid Iqbal. He is conducting, advising, and he is busy in making sure that the tee-off place takes place properly and on time, and the players are aware of what is to be done. So let's concentrate on the screen first. I can see many foreign faces. It includes, of course, some beautiful foreign ladies also.
I can see Hamza there all by himself from Pakistan, looking athletic, looking smart, and looking enthusiastic. And I hope the camera can pick up the first tee shots. There you are. The first to tee off is Graham McDowell. Graham McDowell is a former US Open champion, many victories to his credit, and a player of substance, and a player who's made a big name for himself in the world of golf. So, as he swings and he gets ready, oh my God, that's great. Perfect rhythm. Although the shouting means that the shot may not have been that accurate. Somehow, when the champions play and they hit a shot, what the audience expects is perfection. Even the slightest of error, becomes a big error. And now it's time for young Hamza Amin of Pakistan, who's made a big name for himself. He's from a family of golfers. His father was a champion. And there you see Hamza Amin all prepared and all appearing all rhythmic and focused. And there is that hit there. It sounded nice, and I hope that the ball has gone hundreds of yards, maybe 300 plus yards. And we have the third flight member ready to tee off. Strong hands, good stance, and a good shot too. All rhythmic, all so very perfect. And his look shows that he's satisfied with his shot. And now we have the fourth player here. And this is young Ahmed Beg, this number 2 ranked player of Pakistan professional golf. He's made a big name for himself. He's recognized as a player of substance. And there you are. Total rhythm. Eyes on the ball. Good stance, and all in control of himself. So, on the second day today of this Rumanza opening, we have activity that has started. And this is a match between a champions versus super champions. While McDowell, as you know, is a world-class golfer with world-class victories to his credit. Of course, once you become the US Open champion, then you are entitled to many, many perks which are financially rewarding, which are give you a name in the world of golf, and which makes you looked up to. Yes, last evening, McDowell spent quite a few hours coaching youngsters from Pakistan, and of course, for about 2.5 hours, his focus was on putting. And it was interesting to see how youngsters here in Pakistan put questions to him and focused on him. I can see more activities there.
By the way, today's match, is an exhibition match which will go down in history as a great, great event of the Rumanza inaugural opening. And it's good to see that we have two young Pakistanis as a part of this group, and then we have the known names also. So, as the activity proceeds, let's first of all talk about Romanza. Romanza was chosen as a venue about 4.5 years back. The DHA Multan people, what you call those at the helm of affairs, thought of building a golf course here. So they invited people from overseas, experts from overseas to come and see and to decide how to go about it. And while many were there, obviously, it was Nick Faldo who turned out as the chosen one. Nick Faldo, is known for designing signature golf courses. He is known around the world for being a world-class player in the 90s and later also. Nick Faldo has been the number one player of the world for almost 97 weeks, but is now that he's given up competitive golf, he started to work as a designer on golf courses, and his reputation as a man of excellence has grown. He took this up as a challenge, as a big, big challenge, what you call it. And we find that his efforts, his vision, and his ability to work with the Pakistani team, with the Pakistani project team, has brought about dividends. The first big attribute of Romanza is that we have this project completed on time in spite of the COVID restrictions, in spite of the COVID obstacles, what he calls. We are all so happy about the fact that Romanza as a golf course of excellence stands completed. I hope the people in Multan, those who love sports and those who love the game. यार मुझे लिस्ट नहीं मिल रही प्लेयर कौन कौन से हैं यार कमाल कर रहे हैं ईमान से देखो ना यार ब्लाइंड बैठा है कमाल ऑर्गेनाइजेशन यार किससे कांटेक्ट such delightful activity on the scene, Just look at the large number of fans and the large number of golf players who've come to watch this event, and most of them from overseas. यार जरा हसन साहब की बड़ी ज़रूरत है
I hope the audience in Pakistan, the audience in Multan, and the audience in Asia is watching. And as you can see on the screen, while the players are busy with their shot making, the audience that comprises virtually technical lovers of golf and players of golf so eagerly trying to follow them, trying to see how they play, and trying to see how excellently they apply their golfing skills. I hope we can see a lovely, accurate shot there. So much is happening on the golf course, and these moments obviously are history making moments. And while Hamza Amin from Pakistan and Ahmed Beg from Pakistan are trying to sort of add a touch of fame and excellence to the names, hopefully, if they can beat McDowell, that just might make a big difference to their careers. I wonder if the camera person can pick up the scoreboard also, because for the sake of facilitation, we have a scoreboard accompanying each flight. And hopefully, once this first hole is complete, we will have for you a whole update on the competitive part of the proceedings, of course, while the proceedings, what you call exciting, and while the happenings are so very delightful, we also have to have a look at the run of play and which player is excelling as compared to others. Of course, McDowell is a superstar of the world of golf, and that brand and advantage stays with him. But then Ahmed Beg has the capacity, and so does Hamza Amin, to add more color to the event, to add a lots of more color to the event. Can we have you here for a while? Can you have you here? Whenever you can.
फायदा होगा हसन साहब से कहें ना यार कि उनको कहें किसी को the players have reached the first green, you know what is called, and I can see a lot of activity on the green. Obviously, putting is an important aspect of every competition, and while putting involves no exhaustive physical activity, but it does involve application of nerves and application of skills. And you just have to be in proper rhythm to get your putts in. And that, I think, is a super putt. I think the player also gets a lot of acknowledgement from the fans around him, from the people there who are looking so absorbed and so interested in the run of play. And as the movement goes on, and I think the players are moving to tee number 2 for the second tee off, and very soon, hopefully, we'll have the scores for you from hole number 1. And I hope the producer here can sort of display the names of the players who are right now competing for honors and for some prize money also. I have requested Mr. Hassan to sort of get hold of the names. ये कहना ही पड़ेगा मेरे ख्याल में कि अब हम
माशाल्लाह एक्टिविटीज़ बहुत जारी है जी, मतलब पीटीवी ने बहुत एफर्ट की है. वी ऑलमोस्ट आई एम इम्प्रेस्ड बाय पीटीवी इन द सेंस that we have a 40-member technical team here. There are about 8 cameras around the golf course. There's a OB vans here. There are technical people here. There are engineers, who have covered major events, what you call the sea. And now they are here for this Rumanza inaugural, and they are here to make sure that this message get across to the world that we have a signature golf course in Pakistan also for the first time. Of course, we have a lot of very good golf courses all around the country. If I was to start naming, I would be out of breath. But then this is the first signature golf course of the country. And who do we have to thank for that? None else but that great human being, Sir Nick Faldo. Besides, of course, the technical people here, besides, of course, the DHA, efforts of the DHA, who have put up the finances, who have put up the technical skills, and besides, of course, the project team, who has done wonders. We must keep in mind that these 2 past years, COVID has been there, to sort of place obstacles in the progress and in the development of this whole project. Yet things were managed properly, things were managed in great detail, things were managed by strategizing according to the needs of the time, and the end result is an excellent golf course. And hopefully Multan will be known in the world not for fruits or not for saints and not for its mausoleums, but for this great golf course. I'm sorry to be saying that. I know that has a certain sensitive touch about it, but then that is how things are. We have to attract tourism, we have to attract the best from the world to Pakistan, and this is going to be one good medium to do it. And as we go along, we are all full of hope, we are all full of optimism. And just as efforts have been made to get this project completed, similarly, what you call, the required marketing efforts will be put in to get top class players from all over the world. And as you can see on the screen, what you call, there's greenery all around. The fairways are looking excellent, and so are the greens. And as the match progresses, we will continue to give you updates on what is happening on the golf course, on how the competing players are matching wits with the superstars. Lot of responsibility today on Ahmed Beg's shoulders. Ahmed Beg is the number 2 ranked golf professional of Pakistan, and Hamza Amin is also amongst the top 10 ranked players of the country. Hamza has one big advantage. He comes from a family of golfers. His grandfather, in fact, was a golfer. His father was a golfer of excellence who ruled the country's amateur scene for about 17 years and performed not only on the national scene but also on the international scene. And right now, his father, Taimur Hassan, is the chairman of the Asia Pacific Golf Confederation. And he was here with us for a small round of interview, and he was telling us that the Asia Pacific Golf Confederation now has over 1 billion golfers and 40 countries as its members, and this is the Asia Pacific. And the figure he gave me was astounding. But
That is how golf is developing, and that is how hopefully uh, we in Pakistan hope that the numbers are going to increase. I think what Romanza now has to, besides other priorities, Romanza has to do is to get at least the local boys and girls onto the golf scene. Perhaps if I was allowed to sort of give my views, I think they must go to at least 10 schools of Multan and pick up 20 boys and girls below the age of 10 years and get them here every weekend perhaps for a 2 or 3 hours golfing program. Because once you have such a golf course around a city, you can't afford to ignore the local population. Already today, Multan is known for having a good cricket team, and we're going to have the final PSL match today in Lahore, where Multan Sultans will be playing the final against Lahore Qalandars, and that is a game that is currently the focus of the whole nation. And later in the evening, perhaps you will find millions of people watching PTV to see the final of the PSL between Lahore Qalandars and Multan Sultan. So Multan is lucky today. Multan's name resounds not only in the cricketing field now, but its name also sort of gets circulated all over Asia, all over the world because of this golf scene today. And who else do we thank but Sir Nick Faldo and DHA Multan, and not to forget the PTV Sports, who are all fully represented here to tell people about this great happening. We see a lot of golf activity on the golf course. Taimur son Hamza Amin is there. Our hero Ahmed Beg is there. And also there is Graham McDowell and Hull. So as the activity goes on, we'll continue to show you scenes of the shot making. At least golfers, we will be able to get more joy out of that, because when you see a champion playing, a golfer understands and enjoys the rhythm of the shot making. As we go on and on, hopefully we'll be able to tell you how this scene is happening.
फोन ते मेरा नंबर दे मैंने दस्या कि की हो रहा है कौन कौन खेल रहा है मुझे नहीं नहीं 918 वजह फुल गई मुझे बेल दो जरा सर ये आपको बेल आ रही है हमारा नेक्स्ट कैमरा का here we are at the Rumanza Golf and Country Club, and I wish to share with the Pakistani audience that Rumanza is a word that was picked up with a lot of thought, and Rumanza stands for what? R stands for romantic, and then you have U. U stands for urge. Urge, means perhaps desire, passion, and the urge to do well. Then, of course, you have mag, and the mag stands for magnificence, total magnificence, and this is quite visible here on this golf scene. It's quite visible. And as the cameras pick up the activity around the golf course and focuses on the competing players, obviously the fairways are looking excellent indeed. And I must share with you from the technical angle that the Faldo design has made sure that all things have been procured locally, and this place, the fairways are grassed with paspalum platinum tea grass, and this of course was a choice made out of many other kinds of grass available, and this paspalum grass was chosen for its ability because it has a high salt tolerance and it can tolerate hot weather also. Multan, of course, one can understand that in the months of June and July is a very, very, very hot place. It's a very, very hot place. So, the good news from Rumanza Golf Club is that the Rumanza inaugural stands launched. Yesterday we had a lot of activity. We had 15 foreign players, playing in the Pro-Am. Then we had 15 professionals playing in the Pro-Am. Then we had 15 amateurs playing in the Pro-Am. And the total field was about 60 players. So that generated a lot of competitive activity, that generated a lot of activity that was loved by people here. And Romanza as a golf course, it stood what you call spotlighted. ये लिस्ट डिस्प्ले करनी है
Ladies and gentlemen, we have for you the names of the three ball flights. The first three ball flight comprises of Graham McDowell. He was the former US Open champion. Then we have Hamza Amin. He's the top ranked golf player of Pakistan. We are proud of him. We are proud of his personality. We are proud of the fact that he is an educated person, that um, he can represent Pakistan with a lot of pride and with a lot of with an engaging personality. And then we have Charlie Hull. And the second team, the second three ball team, comprises the Spanish champion Rafa Bello, Ahmed Beg, the number two ranked player of Pakistan, and then one lady player. She is about 16, 15, 16 years old. She was a national champion at the age of 14 years. We expect to see, we have high expectations. As experts in the game, suggest they have high expectations. We can see Hamna Amjad there. That's the girl that I'm talking of, and I think she's done a good putt. She's been applauded all around. So the two ball flights on the golf course on this historic day here are comprised of Graham McDowell, Hamza Amin, Charlie Hull, and then we have Rafa Bello from Spain, Ahmed Beg from Pakistan, and Hamda Amjad from Pakistan. So hopefully the golfers are going to enjoy a good putt here. And just look at the stance, and just look at the putt, and just look at the way he has struck the ball. I think that was a Pakistani भाइयों और बहनों, I have the honor and the privilege of welcoming you to this place of excellence in Multan, the Rumanza Golf and Country Club golf course. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कल भी आपसे माशाअल्लाह गुफ्तगू होती रही कि मुल्तान has been very fortunate, मुल्तान has been very lucky कि DH मुल्तान ने ये एरिया चूज़ किया है to set up the first signature golf course of Pakistan. अच्छा, आप गोल्फर्स तो ये बात समझते हैं, गोल्फर्स तो ये बात समझते हैं कि सिग्नेचर गोल्फ कोर्स क्या होता है. बस ये समझ लें कि जैसे BMW होती है, मर्सिडीज़ भी होती है, फिर आपकी मेहरान भी होती है, तो मतलब ये गोल्फ कोर्सेज में थोड़ा सा मर्सिडीज़ से भी ऊपर चला गया अब मामला जो है मुल्तान में. ऑफ ऑल दी प्लेसेस इन मुल्तान, पाकिस्तान में वी आर लकी टू हैव ऑलमोस्ट 49 to 50 गोल्फ कोर्सेज, जिसमें आपको बताया कि कराची गोल्फ कोर्स का बड़ा नाम है, मतलब कराची DH गोल्फ कोर्स का बड़ा नाम है, अरेबियन सी गोल्फ एंड कंट्री क्लब का बड़ा नाम है. फिर अगर आप ट्रैवल करें थोड़ा सा लाहौर की तरफ, तो लाहौर में हिस्टोरिक गोल्फ कोर्सेज हैं, लाहौर जिमखाना है, पहले रेलवे गोल्फ कोर्स होता था, अब वो रॉयल पाम गोल्फ कोर्स बन गया हुआ है. फिर place of excellence, we have Defense Raya Golf and Country Club golf course, ठीक है ना. फिर if you travel towards इस्लामाबाद के अपने बड़े अच्छे गोल्फ कोर्सेज हैं. पिंडी में जो है बड़ा हिस्टोरिक गोल्फ कोर्स है. फिर पेशावर में बड़े हिस्टोरिक गोल्फ कोर्सेज हैं.
In fact, we have golf courses all over the country, even places like, what you call Okada has a golf course. Place like पता नहीं मुझे नहीं पता मुल्तान का अपना कैंट का golf course है. लेकिन somehow अगर आप इसको मतलब आप मर्सिडीज कहेंगे तो उसको फिर आप मेहरान ही कहना पड़ेगा आपको. अब उनको भी थोड़ी सी मतलब जो है ना एहसास करना पड़ेगा कि यार इसके मुकाबले में कोई चीज़ सेटअप की जाए. तो यहाँ इस वक्त जो है ना सर ये हो रहा है रोमांजा इनाग्रल. रोमांजा इनाग्रल मींस कि जी गोल्फ कोर्स की कल ओपनिंग हुई, कल एक छोटा सा मैच हुआ और आज हम जो खेल रहे हैं आज जो आपको पता है कि भी गोल्फ में डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं क्या नाम चैम्पियनशिप्स के. एक तो खैर स्ट्रोक प्ले तो होता ही होता है विच इज़ वेरी कॉमन फॉर्मेट जिसमें कि जो वर्ल्ड क्लास जो मैचेस होते हैं वो स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट पे खेले जाते हैं. लेकिन आज जो हम खेल रहे हैं आज हमारा है ये स्क्रैम्बल फॉर्मेट. स्क्रैम्बल फॉर्मेट में ये होता है कि हर टीम में 3 मेंबर्स होते हैं. तीनों जो है ना मतलब टी ऑफ करते हैं, तीनों शॉट्स मारते हैं. जिसकी शॉट बेहतर होती है मतलब वो फिर काउंट होती है फॉर द नेक्स्ट शॉट. एंड फ्रॉम देयर ऑन दैट्स हाउ इट कंटिन्यूज व्हाट यू कॉल सी. तीनों पट भी करते हैं. जिसका पट ज़रा बेहतर होता है देन दैट बिकम्स द फाइनल पट. हाँ जी जी सर. जी सर. सब होल नंबर 4 और 3 है. दोनों टीमों ने 3-3 किया ठीक है जी. और लीडिंग टीम स्टिल इज टीम 1 ठीक है. सेक्टेवर हल एंड हमजा अमीन. अच्छा जी इस वक्त जो गेम हो रही है ना माशाल्लाह स्क्रैम्बल फॉर्मेट में वी आर ऑन द 4th होल. And I have to repeat to you that the teams comprise of Graham McDonald. Graham McDonald आपको पता है मैंने बताया आपको कि ये US ओपन जीत चुके हुए हैं and he has about 11 victories on the. यार ये सुनना सद का स्कोर सुनना ज़रा. Victories to his credit, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं. वर्ल्ड क्लास का नाम है इनका मतलब एंड वी आर लकी टू हैव हिम हियर. इनके साथ पाकिस्तान के हैं हमजा अमीन. हमजा अमीन इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट गोल्फ प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान. और इनके साथ एक लीडिंग लेडी है यूरोपियन टूर की जिसका नाम है चार्ली हल. स्पेन की है और यूरोपियन टूर की ये बहुत एक प्रोमिनेंट गोल्फ प्लेइंग लेडी है. जो सेकंड टीम है वो है स्पेन के हैं राफे बेलो. राफे बेलो इज़ बिग नेम इन यूरोपियन गोल्फ. बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है. फिर हमारे यंगस्टर हैं अहमद बेग. अहमद बेग इज़ द नंबर 2 गोल्फ प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान. और तीसरी जो बच्ची है ना जी हमना अमजद. ही इज़ अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट गर्ल हुज मेड अ बिग नेम फॉर हिमसेल्फ. एज अ 14-year-old शी बिकेम द नेशनल चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान और ये इनकी टीम के मेंबर है. अच्छा इस वक्त जो है ना ये 4 होल्स कंप्लीट कर चुके हैं. अब जो ग्रैहम मैकडोनल्ड डबल की टीम है, हमजा अमीन की चार्ली हल की टीम है, ये खेल रहे हैं -3. और जो टीम है राफे बेलो और अहमद बेग और हमना अमजद ये खेल रहे हैं -2. और जो मैच का स्टेटस है 4 होल्स के बाद वो ग्रैहम मैकडॉवल, हमजा अमीन और चार्ली हल की टीम जो है वो एक स्ट्रोक से लीड कर रही है. मुकाबला जो है ना काफ़ी ज़रा वो जो होता है ना शार्प एज्ड है. बहुत अच्छी शॉट मेकिंग देख रहे हैं, बहुत उम्दा हम गेम देख रहे हैं और बहुत ही ये हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए टू वॉच दीज प्लेयर्स इन एक्शन. क्योंकि हमारे लिए सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि हम देख रहे हैं कि जो हमजा अमीन हैं और जो अहमद बेग हैं और हमना अमजद हैं वो किस तरह. I hope that they don't get overawed. They don't look overawed by the presence of these mighty players. और माशाल्लाह अच्छी शॉट मेकिंग कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को अच्छी तरह अप्लाई कर रहे हैं. और जनाब अली ये आपके लिए हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि दे हैव अ बिग फ़ैन फॉलोइंग देयर. दे आर बीइंग फॉलोड बाय मैनी लीडिंग प्लेयर्स. और कोर्स पे माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई है. और रोमांजा गोल्फ कोर्स जो है ना इस वक्त
दुनिया की स्पॉटलाइट में है, थैंक्स टू पीटीवी. PTV has sent a 40 plus team here, to cover this event, Or I'm so glad to tell you that we have a lot of experts from PTV here, आपको पता है कैमरामैन तो बड़े सीजनड होते ही हैं, लेकिन जो टेक्निकल टेलीकास्ट है, जो मतलब जो है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी. And of course, ladies and gentlemen, while the proceedings are going on, we are lucky to have with us a youngster from Karachi, Umar Khalid. Umar Khalid ने माशाल्लाह थोड़े से अरसे में ना बड़ा नाम पैदा किया है. पता नहीं इनके वालिद साहब को शाबाश दें, इनकी वालदा को शाबाश दें, या इनकी अक्ल और समझ को शाबाश दें. क्या नाम है? यशल शाह है. और आपका? साद. अच्छा जी, तो उमर खालिद साहब थोड़ा सा ज़रा पीछे हटे हुए हैं इस वक्त, अभी आते हैं. तो मैं आपका तारफ़ कराता हूँ यशल शाह से. यशल शाह इज़ अ यंग वन फ्रॉम कराची हु इज़ ऑलरेडी मेकिंग बिग वेव्स. जब भी खेलते हैं माशाल्लाह, आपको इनकी स्कोर कार्ड देख के बड़ी खुशी होती है कि यार आपको टैलेंट है, किसने एफर्ट की हुई है, मेहनत की हुई है. तो आई वुड लव टू टॉक टू हिम. आई वुड लव हिम टू टेल यू कि करियर कैसा जा रहा है, मतलब पेरेंट्स की सपोर्ट कितनी है, इदारों की सपोर्ट कितनी है, और गोल्फ क्लब की सपोर्ट कितनी है. यशल शाह साहब. साहब तो मैं नहीं कहना, यशल कहूँगा, ठीक है ना. तो लेट्स हैव यू टॉकिंग टू द ऑडियंस हियर ऑन पीटीवी. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं. और हमारे लिए सबसे बड़ा एक इवेंट होता है पाकिस्तान में फार्लो सीरीज़, स्पेशली जूनियर्स के लिए, जो मतलब सारे पूरे ओवर. आई एम 17 राइट नाउ. तो एक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जूनियर्स गोल्फर्स के लिए, जो उनको शौक़ होता है कि बाहर ट्रैवल करें, और ये एक इवेंट होता है जिससे आप जीत के से बाहर जाते हो और सर निक फाल्डो से मिलते हो, वो उनका डिज़ाइन कोर्स खेलते हो, जो फिर आगे जीतते हैं वो मैच वियतनाम में, वो फिर क्वालिफाई करते हैं फॉर वर्ल्ड ग्रैंड फाइनल. तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वालिफाई किया, बट ड्यू टू कोविड हम लोग नहीं जा सके. बाकी एक अच्छा एक्सपीरियंस है. और एसजीए जो हमारी सिंध गोल्फ एसोसिएशन है, वो काफ़ी सपोर्ट करती है हमें, और मेरे पेरेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. मेरा आपसे सवाल ये जी. है कि आपकी जो डेली ड्रिल क्या है, क्योंकि देखें कल हम बात कर रहे थे बड़े बड़े एक्सपर्ट से, यहाँ दुबई से भी साहब आए हुए थे, रॉबी साहब और भी. तो एवरीवन टॉक्स ऑफ हिटिंग 1000 बॉल्स यार. अब पता नहीं इसका ड्रिल का मतलब क्या है, और आप किस तरह इसको मतलब परफॉर्म करते हैं, और कितने पैशन से, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि खाली बॉल मारना काफ़ी नहीं है, एवरी बॉल हैज़ टू बी हिट विद अ पैशन. एवरी शॉट इन गोल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट. सो एक शॉट मारने के लिए आपको उतनी प्रैक्टिस चाहिए होगी जितनी, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि जैसे अगर बैट्समैन खेलता है कि उसको अपने स्ट्रोक का पता होता है कि वो ये शॉट मार सकता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस होती है. ठीक है. अगर हम लोग इतनी 1000 से ज़्यादा बॉलें नहीं मारेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस शॉट मारने का. तो मतलब जितना मतलब हमें एक्सपीरियंस चाहिए उस शॉट को मारने के लिए, तो वो इतनी बॉलें हमें मारनी होंगी, और वही शॉट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा. विद इन 100 यार्ड्स और 150 यार्ड्स हमें वो शॉट पक्के करने होते हैं, ताकि वो बॉल होल के करीब आए और हम लोग अपना स्ट्रोक गेन कर सकें वहाँ से. अच्छा, ये बताएंगे कि आपकी पहली बड़ी परफॉर्मेंस क्या रही है, मतलब कितने साल हो गए खेलते हुए आपको? मुझे तकरीबन 14 ईयर्स हो गए खेलते हुए. व्हेन आई वाज 2 आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ. अच्छा. मतलब एक यार मुझे तो आप बुजुर्ग लग रहे हैं फिर तो. नहीं 70 अंकल ओनली. तो 2-3 इवेंट्स काफ़ी नहीं, लेकिन आपका जब थोड़ा सा लीप फॉरवर्ड हुआ, नाम जब पुकारा गया, ग्रॉस आपने, अब 72 खेला कभी आपने? जी 72 भी ब्रेक किया है. क्या खेला हुआ है आपने? जी बिल्कुल. ठीक है. तो इस वक्त आपकी मतलब ड्रिल ये है कि कितने घंटे से आप प्रैक्टिस करते हैं? यूजुअली मैं स्टार्ट करता हूँ सुबह 6 o'clock अपनी प्रैक्टिस, देन 9 तक प्रैक्टिस करता हूँ. आपका घर कितनी दूर है गोल्फ कोर्स से? 2 मिनट्स अवे. ओह ग्रेट.
तो फिर 9 to 3 मेरा कॉलेज होता है, उसके बाद फिर मैं अब कॉलेज से कौन सी वापस क्लास में है? आई एम डूइंग ए लेवल्स इन राइट नाउ। ए लेवल राइट नाउ, अच्छा। तो फिर तो वापस आके आपका ओ लेवल के रिजल्ट्स अच्छे थे? काफ़ी अच्छे थे, इट अच्छा। वाज एक्सपेक्टेड ग्रेड्स एंड उसके बाद पेपर एग्जाम्ट हो गए थे तो काफ़ी इजी हो गया था हमारे लिए ग्रेड लाना। नहीं ऑब्वियसली बट हार्ड वर्क तो किया ही होगा ना बिल्कुल यार। बिल्कुल। अच्छा। तो तो यही बताएं कि भाई प्रोफेशनल गोल्फ खेलनी कि नहीं खेलनी? प्रोफेशनल गोल्फ इंशाल्लाह खेलेंगे, बट अभी प्लान यही है कि कॉलेज गोल्फ खेलनी है अमेरिका में, वो फिर हमें एक चांस देगा टू प्ले पीजीए टूर। यार फिर तो आप हमसे तो मतलब कट ऑफ हो जाएंगे ना नहीं फिर नहीं तो। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आके बिल्कुल सर्किट आई होप खेलेंगे यू नो फिर। दैट हमारा एक्सपीरियंस ये है, यू नो एज द man belonging to the elder sort of category of age, we have seen so much talent going to America, you know, so much talent we have just lost, and it's all gone to America. क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है खेलने की, यहाँ पर इतना नहीं करते, स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ यूजली क्रिकेट प्रमोट होता है और फुटबॉल कम, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट होता है, ऐसी गेम्स नहीं होती I हैं। must share with you that I have a grandson in Canada who's 13 years old. उनको वालिद साहब को उनको पैशन ये है कनाडा में कि मैंने इसको बनाना है वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर. But he has told me that unless he goes to America or to Europe, he cannot become a champion. वो बिल्कुल कहता है कि भी ये कनाडा की जो भी फैसिलिटीज़ हैं ना मतलब वो ज़ीरो हैं यूएस के मुकाबले में और यूरोप के मुकाबले में. बिल्कुल। मैं अभी हाई स्कूल वहाँ पे कर चुका था, मैंने 2 वहाँ पे क्लासेस की, तो वहाँ पर सपोर्ट जो है कोचेस का वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग यूजुअली अमेरिका शिफ्ट होते हैं, क्योंकि उनकी एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके कोचेस की एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स आगे आते हैं। यार इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू. कुक मैं आपका नाम बहुत सुनता रहा हूँ, आपसे मेरी इंटीमेट मुलाकात नहीं हो सकी. आई हैव इवन रिटन ऑन यू क्योंकि आपको पता है कि लाहौर की गोल्फ सारी मैं ही कवर करता हूँ और जो इंग्लिश के सारे अखबारात हैं सम हाउ मेरा लिखा हुआ जो कबूल कर लेते हैं और हज़म भी कर लेते हैं. तो आई वुड लव टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर कैरियर. We must exchange notes on the WhatsApp. So, ओके। whatever happens, whatever changes take place, please let me know. बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। And we have one more youngster here. अब अपना तारफ़ खुद कराएंगे, कराची से आए हुए हैं मतलब यू नो और ऑब्वियसली हैं इधर ही होते हैं। इधर ही हैं. जी जी। अच्छा इंटरेस्टिंग मुल्तान के हैं यार. ये Oh great यार. Yeah. It's good to talk to you है। and I'm lucky to sort of find you here. Yeah. सो पीटीवी स्पोर्ट्स में आप अब ज़रा अपना नाम बताएं अपना और बताएं कि आपके क्या लाइफ के प्रोग्राम्स हैं. जी मेरा नाम साद हबीब मलिक है। मैं पाकिस्तान जूनियर टीम में खेलता हूँ अंडर 16 में। अच्छा जी. तो फोल्डो सीरीज़ जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में हर साल इनाग्रेट करवाई जाती है और इसमें पाकिस्तान से सारे जो अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 21 कैटेगरी के प्लेयर्स हैं वो सब बिल्कुल खेलते जी. हैं। अभी जैसे डीएचए मुल्तान ने ये एक बहुत अच्छा इवेंट इनाग्रेट करवाया है, इसमें फोल्डो भी आए हुए हैं, निक फोल्डो सर जो पाकिस्तान में मैच को करवाते हैं। तो जी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और हमें इससे बहुत सीखने को भी मिलता है। अब आप खेलते कहाँ रहे, मुल्तान कैंट में या क्या कर? मुल्तान कैंट में रिसेंटली अभी हम कराची से यहाँ शिफ्ट हुए हैं डीएचए में। माय फादर इज़ इन डीएचए, सो अच्छा हम जो यहाँ पे फादर्स इन खेलते हैं। डीएचए. जी। और तो कराची में शिफ्ट हुए कितनी देर हो गई है? 4 इयर्स इसका मतलब आपने गोल्फ सीखी कराची में है? कराची में सीखी है बेसिकली। तो यहाँ कोई कम्पिटिटिव गेम मिलती है नहीं मिलती, क्या होता है? अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि डीएचए मुल्तान में बहुत अच्छा कोर्स बना है, हाँ, तो हाँ. इंशाल्लाह यहाँ पे और प्लेयर्स आएंगे, एकेडमीज़ खुलेंगी और लोगों में स्कोप आपके बढ़ेगा। आने से पहले ना मतलब मैं जब मौका मिल गया तो मैंने जी। आपको पता है फिर वो ज़रा बंदा फिर बोल जाता है जो नहीं भी बोलना होता. जी जी तो मैं तो कह रहा हूँ क्या नाम के भाई रोमांजा का पहला फ़र्ज़ ये है कि लोकल बच्चे ढूंढें. जी दे ऐसे ही। मस्ट गो टू एटलीस्ट 10 to 20 schools, pick up at least perhaps 15 girls and 15 boys और उनको फैसिलिटेट करें कि यहाँ आके हफ्ते में 2 या 3 दिन वो मतलब दे शुड गो थ्रू द होल रूटीन, यू नो, जी physical exercises Yes, and yes. golfing, what you call drills and everything, you know. हम्म, पहला हक तो मुल्तान का बनता है ना. जी जी पहला हक जो है मुल्तान में बनता है. अच्छा जी, we are going on a small break. We'll be back inshallah soon with this all this activity. थैंक यू।
back to Rumanza Golf and Country Club. We are back to the wonderful environments of what is happening at this Rumanza inaugural at the Rumanza Golf course. The scramble match is still on, and the scramble format, is a very special format for golfing competitions. इसमें दो टीम्स खेल रही हैं. ग्रैहम मैकडॉवल की टीम है जिसमें हमज़ा अमीन भी हैं, और एक स्पेन की लीडिंग लेडी है यूरोपियन टूर की, चार्ली हल. सेकंड टीम जो है वो है, उसमें स्पेन के राफे बेलो हैं, पाकिस्तान के अहमद बेग हैं, और पाकिस्तान की एक टीनेजर है अमजद, जो कि 14 साल की उम्र में नेशनल लेडीज़ चैम्पियन बन गई थी. 6 होल्स जो हैं उनकी गेम मुकम्मल हो चुकी है, और इसमें आपको पता ना, टीम स्कोर जो है वो एज अ टीम बनती है, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ टीम. जो ग्रैहम मैकडॉनल्ड की टीम है वो 6 होल्स के बाद खेल रही है एट अ स्कोर ऑफ -5, एंड -5 ऑफ कोर्स मींस टोटल एक्सेलेंस. और जो राफे बेलो और अहमद बेग और हमना की टीम है वो खेल रही है एट -3. इसका मतलब कि जो ग्रैहम मैकडॉवल की टीम है उसको 2 स्ट्रोक्स का जो है एडवांटेज है. सो लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन. इट्स वंडरफुल एक्टिविटी. Top of the line players of Pakistan and the world of golf are playing, and they are performing superbly. माशाल्लाह गेम बड़ी इंजॉय की जा रही है. और जनाब जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे ओवरसीज़ के प्लेयर्स आए हुए हैं, सारे के सारे जो हैं बड़े बहुत इंटेंटली गेम वॉच कर रहे हैं. जैसे मैंने पहले आपको समझाया था कि इसमें जनाब जो है ना, हर प्लेयर जो है वो हर शॉट वो मारता है, लेकिन बाद में सेकंड शॉट के लिए जो बेस्ट शॉट है वो चूज़ की जाती है. दिस हैपन्स ऑन द टी ऑफ शॉट. This happens on the tee off shot, this happens on the fairway shot, this happens on the putting green also. So 6 holes out of 18 holes, we have completed 6 holes, and at the end of 6 holes play, जो टीम है ग्रैहम मैकडॉवल की, ग्रैहम मैकडॉनल्ड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये वर्ल्ड क्लास गोल्फर हैं. ये जनाब US ओपन चैम्पियन 2010 में जीत चुके हैं, और आई थिंक ही हैज़ अबाउट 11 wins to his credit on the European tour, and still continues to hold an important position on the world tour. और इनके साथ हैं पाकिस्तान के प्राइड, पाकिस्तान की प्राइड हैं हमज़ा अमीन. He is one of the top ranked golf professional of Pakistan at a very young age, full of promise, full of commitment, and full of a career that is going to be not only wonderful but also that is going to be incredible indeed as he matures as a golfer, as he matures, because he as a competitive player, and as he gains more and more competitive experience. Obviously मतलब बंदा प्रैक्टिस करके अपनी शॉट्स बेहतर कर लेता है, लेकिन competitive environment में जब प्लेयर खेलता है तो उसमें फिर थोड़ा सा ज़रा कुछ नर्व्स का मामला भी आ जाता है, कुछ एडवर्सरी की जो है ना स्ट्रेंथ्स का मामला भी आ जाता है, और फिर ये है चेंज एनवायरनमेंट, क्योंकि जब लोग पाकिस्तान में खेलते हैं तो ज़रा माहौल डिफरेंट होता है, जब बाहर जाते हैं तो एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होती है.
ग्रेहम मैकडॉवल की टीम में हैं हमजा अमीन पाकिस्तान के, और चार्ली हल हैं लीडिंग लेडी ऑफ द यूरोपियन टूर, और ये है स्पेन की। और जो सेकंड टीम है राफे बेलो फ्रॉम स्पेन. Rafael Bello is a golfer of substance, is a golfer known, very well known on the European tour. और इनके साथ पाकिस्तान की प्राइड है यंग अहमद बेग, जिससे हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिससे हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तीसरी जो टीम मेंबर हैं वो है हमना अमजद. हमना अमजद की जो है जो स्पेशल जो आउटस्टैंडिंग एट्रीब्यूट है वो है कि एज ए 14-year-old गर्ल शी वन द नेशनल लेडीज़ टाइटल इन पाकिस्तान. इनसे भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं. व्हेन यू सी हर प्लेयर यू विल बी ओवरऑल्ड. बहुत अच्छा उम्दा खेलती हैं, बहुत ही अच्छा खेलती हैं. बेतहाशा ज़रूरी है. ऑफ कोर्स पीटीवी का तो थैंक यू है ही है, लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ जो मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब उनकी एक बड़ी ही मतलब कोऑर्डिनेशन एफर्ट होती है. उनकी थोड़ा सा विजन भी होता है कि व्हाट इज़ बीइंग शोन हियर इज़ बीइंग शोन प्रॉपरली एंड करेक्टली. और जो ऑडियंस है मतलब जो, क्योंकि देखना सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ऑडियंस को खुश रखना है. what we are showing has to mean something to the audience also. और ऑडियंस में आपको पता है कि बड़े बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, समझदार लोग भी होते हैं who understand that what kind of technical backup is required to be able to show this. तो मैं आपसे बात कर रहा था before I went on to this section कि हमारे पास इस वक्त लेडीज़ गोल्फ की डॉक्टर आसमा शामी बैठी हुई हैं. It will be a pleasure to talk to her and sort of give her the mic for a while and let her talk about for a few minutes about ladies golf in Pakistan. और ख़ास तौर पे ये जैसे हमना अमजद खेल रही हैं और जैसे और लेडीज़ जो हैं they are coming up. Dr. Asma, welcome to the PTV TV screens, and welcome. Thank you for coming us, sparing time for us, and of course, it's on to you now. Thank you so much, Rajasan. I think you're the biggest supporter of ladies golf in Pakistan. Why not? Why not? Ladies and gentlemen, I am Dr. Asma Shami. I am the chairperson, Ladies Golf PGF, and it's a great honor to be invited here to speak to you. Just a few minutes on ladies golf. Ladies golf has come a long way. We used to be 5 years back. We were a subsidiary category, and all praise to Janal Hilal for giving us the support, this venue, this springboard to take off. And at this particular moment, we have about seven from a subsidiary category. We have 7 exclusive ladies golf matches on the PGF calendar, which is a lot. We've conducted the first ever international where we had 7 ladies team come over from all the region. That is a history in golf in Pakistan, not just ladies golf in Pakistan. So we have all the support, and we are we're just still crawling, we have our teething problems, but we are being supported by all these gentlemen. Of course, you have hurdles. Now what we are, last week, we had this championship where we honored Miss Ghazala Ansari. She was an icon in 60s. She won the national champion 6 times, and she became 1 handicap back in 60s. And after 50 years, a lapse of 50 years, now we have 3
Rimsha, Parkha, and Hamna as one handicappers. Ghazala Yasmin has leveled Ghazala's Ansari's record of winning the championships, but nobody has ever broken her record. Still, we don't have scratch players. Still, we don't have the anybody winning the national champion 7 times. Last month, we celebrated Soni Wali in Peshawar. She was a trailblazer. Now young girls look at the posters and say, "Oh, if Soni Wali can play, so can I." So ladies golf is going a great way. The now the final edition is we've just PGF has been very supportive and kind. They've just nominated Ms. Munazza Shaheen as the chief referee of the International Ladies Golf Championship, which is coming up in Islamabad. On the it's going to we'll have the prize distribution on the I think the first time this has happened. a chief referee. Yes, Yeah, this is the a first lady be acting as a chief this is referee the in first an time ever, international and event. PGF takes a lot of pride, and our pride has no bound. We are just over the moon. The reason being is, on the lighter side, औरतें थोड़ी सी सख्त तबीयत की होती हैं. They give the rules little harsher than gentlemen. So, because when men referee are on the ground, they say, "Oh, Obviously rules तो rules होते हैं ना, oh देखें yes, they are बात तो very ये है ना tough." जी. लेकिन मर्दों में थोड़ा सा soft अभी भी spot है for ladies. इतने strict, they have a little softer view, but we need somebody with strict rules. We do, and this is a breakthrough. It's breaking the glass ceiling, so to speak. You see, so we are paving our way towards excellence. Talking about Hamna Amjad on the course, she the first hole brilliant, absolutely brilliant. And you know, when I spoke to her before that, she was just a bit nervous. Naturally, she's a 18-year-old playing with all these experienced players, but she held her ground. Her tee shot was excellent. Her second shot was on the green, and she had a putt of about 20 feet. And you know, there was a loud applause. The only thing she lacks is a bit of a confidence. And where does this confidence comes from? This confidence comes from exposure from abroad, international exposure. That, I'm sorry, we are lacking on that in that field. And inshallah, we'll one is डॉक्टर शामी, हम बैठे हुए हैं मुल्तान में, हम बैठे हुए हैं रोमांजा गोल्फ क्लब में. अब रोमांजा की भी कुछ जिम्मेदारियां बताएं ना, कि कोई मुल्तान से कम स्कूल से 10 लड़कियां पिकअप करें, 10 लड़कियों को जनाब मौका दें कि हम हर हफ्ते एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस अ वीक दे कम हियर, दे हैव अ 2 आवर सेशन, 3 आवर सेशन. Khwaja कोई Sahib. इस किस्म की बात करें ना आप, ज़रा ये भी Khwaja तो बात Sahib, you करें. underestimate ladies. You underestimate ladies. We were in Quetta, where we took 50 girls to play the first ever ladies championship in Quetta. क्वाइट राइट. और वहाँ पे ये बात में शुरू हुई थी, इतनी औरतें तो बाजार में नहीं है जितनी गोल्फ कोर्स पे उधर थी. So we collected 14 girls from Quetta. They are on our WhatsApp list. We keep in touch. अब मेरी कोशिश है कि the basic hindrances, we left 3 ladies golf bags there for them to practice. We've instructed the coach to give them free coaching, and now we're facing little because of security reasons. The golf course is inside the cantonment, so we need a bit more help there, and I'm sure inshallah very soon we'll overcome that also. Once the girls have the playing field, they have a golf course to themselves, they can practice. So I mean, I always say best is the enemy of good. एक दो भी निकल आए. What I'm trying is, next time हमारा match हो, we get 4 girls from Quetta. We'll sponsor them. They'll come and be our guests. They'll look around, feel the thing. And coming back to Multan, we've just had a college visiting here. Zakaria University की लड़कियाँ आई हुई हैं. And I've just told Hadia Wakar, she stands out to be the leader. So we've made her the lady captain of Multan. Yes, that's the start. And I've told her I need 40 girls who play sports. I can see them walking around on the course. So we are going to induct them. I'm going to request PGF, Prajal Hilal, to, if we can, or sponsor them, to put about 3 ladies golf bags in the club where they can come ये and इनका आपने practice. नाम क्या बताया है लड़की का? Hadia Wakar.
Hadia Wakar. We have to sort of announce it here so that it No, gets across, you know, let her and get her footings right. it gets registered. I know. No, no, she's Hadia registered. Wakar is the name. Yeah, yeah. So, My dear audience from Pakistan, Hadia Wakar from Multan. yes, Sadia. But that's how you start. You see, you have two, three. But again, everybody here is very receptive. I've spoken to the director, the colonel in charge, the brigadier in charge. They're all very supportive. They said, "हाँ जी, बिल्कुल, आप लाएं तो सही." So this is the thing that has come about with having the ladies exposure to the gentlemen. Quite right. It is the support of the gentlemen. हमारे भाई हैं, बाप हैं जो हमें भेजते हैं. But again, for ladies, you have to provide some benefits, incentives. इस चीज़ को बहुत क्रिटिसिज्म होता था. हम अपनी जब इंटरनेशनल हुआ था. मैं क्या डॉक्टर आसमा, मैं आपको कहूँ कि आप कुछ नूर खान से थोड़ा सा आगे बढ़ गई तो नहीं नहीं प्लीज प्लीज जस्ट अ हम्बल किसी एफर्ट. जमाने में हम नूर खान का नाम नहीं सुना नहीं करते नहीं थे जस्ट अ कि वेरी जिस काम हम्बल को एफर्ट. पकड़ता है अगेन बस आई काम को टेल आगे लेके चल पड़ता नहीं है. नहीं जी, इट्स जस्ट अ हम्बल एफर्ट and God is kind. God is kind. Thank you so much. I'm Thank you much for obliged. coming here. Thank Thank you for this piece of advice Thank you. and this great information that you made a lady captain here. Thank you so much. That is don't- good news, you know, Yeah, for we don't Multani have people. any players as yet, but we do have a lady captain. क्योंकि हमने मुल्तान के Thank लोगों you. में ना ये जो है ना एक्साइटमेंट है, इसको इससे ना बाकायदा हमने जो है वो मतलब कि ज़बरदस्त काम करना है मुल्तान के लोगों में कि भाई वो कहें कि यार क्या For hole number 17. Sorry, now can you repeat? Can you repeat? Hole number 17, team 1 3, team 2 2. Hassan Saab, before the concluding moments, और हसन साहब और उमर साहब जो प्रोडक्शन टीम के लीडर्स हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब होगा कि मैं आपका उर्दू में शुक्रिया अदा करूं, मुअद्दबाना शुक्रिया अदा करूं. और आप बड़े पेशेंट रहे हैं, मतलब खैर टेक्निकल बातें तो अपनी जगह होती हैं कि किस तरह आपने अपनी टेक्निकल टीम को जो है ना मतलब हमारे हवाले कर दिया, लेकिन हमें भी आपने बड़ा सपोर्ट किया. हमें भी आपने जो है ना वो दूर से कोई इशारा करके और कान में आके बात करके जो है ना मतलब इनकरेज करते रहे. जो आपने हमें भी वेल डन कहा उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस ह्यूज टेक्निकल एफर्ट. After all, this is a new golf course, what you call see, and coming here was an experience for PTV itself. PTV माशाल्लाह हर स्पोर्ट्स कवर करता है, बहुत सारी स्पोर्ट्स कवर करता है, लेकिन गोल्फ में ज़रा ये है कि अरीना बहुत बड़ा हो जाता है. देखें ये जो गोल्फ कोर्स है इसका कोई 270 एकड़्स का एरिया है, मतलब जो कि आपने कवर करना होता है. और आई understand that you had about 9 cameras moving around the golf course, and of course these huge vans that are standing here. So please register our thank you, and please keep in touch with golf, keep your interest in golf. And Rumanza has to be thankful to you all also, and to PTV, and for a great effort. The competitive action continues. The competitive action is moving towards the end. थोड़ी सी उदासी भी हो रही है क्योंकि we had a wonderful day yesterday. बड़े बड़े लोगों से बातचीत हो गई यहाँ. आपको पता है कि कल हमने हमारे ओवरसीज़ के हैं, क्या नाम, रॉबी, who is linked to the Arabian radio network in UAE. उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मतलब गोल्फ के बारे में, गोल्फ प्रमोशन के बारे में, that was just
अनइमेजिनेबल। उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, गपशप हुई, ऑब्वियसली हम तो सवाल पूछने वाले थे, लेकिन वो जो जवाब दे रहे थे, उनकी जो है ना स्पोकन लैंग्वेज फ्लुएंट थी, उनकी जो थी वो वोकैबलरी बड़ी अप्रोप्रिएट थी। सो ये गेव अस अ गुड टाइम, यू नो, मतलब मेमोरेबल टाइम। और जो टीवी ने रिकॉर्डिंग की होगी, और अगर उस रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले किया जाए इन पीसेस, इन बिट्स एंड पीसेस, तो मतलब पाकिस्तान की जो है ना गोल्फ सीन, जो है पाकिस्तान का गोल्फ सीन, उसके लिए मतलब जो है ना ये ज़बरदस्त काम होगा। तो वी जस्ट सीन अ शॉट बाय हमदा अमजद वंस अगेन। Let's appreciate this little one's rhythm, this little one's capability, this little one's what you call uh, compact presence on this golf scene. You know, can you imagine? You know what you call see कि जहाँ चैम्पियंस खेल रहे हों और वहाँ हम अब एक बच्ची से कहें कि आओ भाई तुम भी खेलो, और ये भी एक्सपेक्ट करें कि ये ना सिर्फ अच्छा खेलेगी बल्कि बहुत ही अच्छा खेलेगी, बहुत ही अच्छा खेलेगी, बहुत ही अच्छा खेलेगी। So the game goes on, you know, and the game is moving towards the end. These are the concluding moments of the game. So let's enjoy them. Let's see how this great scrambles match play ends. You know what you call थोड़ा सा पल्ला भारी है ग्रैहम मैकडोनल्ड की टीम का, जिसमें हमजा अमीन है, और मुझे बार बार कहना पड़ता है जिसमें एक लेडी हैं चार्ली हल। और लेडी कोई आम लेडी नहीं है, ये यूरोपियन टूर की एक चैम्पियन गोल्फ प्लेयर है। यूरोपियन टूर में बहुत सारी विक्ट्रीज़ इसके नाम पे हैं, और इसका यहाँ आना ही है जो हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर है। The way she moves around the golf course, and she was there। कल शाम को इसने ऑलमोस्ट आई थिंक 2.5 आवर्स का कोचिंग क्लिनिक भी किया है। She was patient about it, you know, and she really impressed with her coaching abilities also, and the way she communicated with the people all around here, and made them feel important, made them feel more learned after interaction with her and after listening to her advice and her demonstration shots. So Charlie Hull, please remember us when you go back. Stay connected and keep thinking of how to develop this great Rumanza golf course into a place of excellence. We must have a lot of ladies like you coming here to play golf here, and I think you will in your own way add value to this whole effort. We are seeing some good approach shots, you know what you call see. The fans have all been there all through the 18 holes. Hopefully they've loved every shot, they've loved every action. क्योंकि देखें ना, शॉट मेकिंग तो अपनी जगह है। शॉट मेकिंग इज़ परहैप्स, अगर आप 4.5 घंटे का राउंड खेलते हैं तो शॉट मेकिंग टेक्स अबाउट what 10 to 12 or 15 minutes, you know, of your time. But the rest of the time is when you move around the golf course, you know, go from hole to hole, from the one ball position to another ball position. And the way you do that, you keep your concentration intact and you keep yourself absorbed and involved and engaged, you know, वो जादू है, वो जादू है जो कि थ्रू एक्सपीरियंस आता है। वो जादू है कि जो कि आपकी जो है ना इंटेंस जो है इंटरेस्ट होता है
उससे रिज़ल्ट करता है. So let's keep watching, let's keep going. आई विश कि थोड़ा सा कैमरा ज़रा ज़्यादा बेहतर आपकी व्यूज़ दिखा सके, ताकि क्लोज़अप जो है ना मतलब वो आपको भी इंटरेस्ट करेंगे, हमें भी इंटरेस्ट करेंगे. एंड एज वी गो लॉन्ग वी मेक श्योर दैट ये जो फाइनल मोमेंट्स हैं मतलब ऑफ दिस कंक्लूडिंग रोमांजा's Campbell match play today, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन गोल्फर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है. यू नो व्हाट यू हैव इन दिस 6-person team, in fact not 6-man team but 6-person in fact team. दो तो लेडीज़ हैं, एक सुपरस्टार हैं यूरोपियन गोल्फर की और एक स्टार हैं पाकिस्तान गोल्फ की. यूरोपियन टूर गोल्फ की जो सुपरस्टार हैं वो चार्ली हल हैं, और जो हमारी अपनी हैं पाकिस्तान की जो स्टार हैं वो हमना अमजद हैं. तो ये इंशाअल्लाह ताला मतलब ये हमना अमजद का नाम आप सुनते रहेंगे. हमना अमजद जो है ना वो she is bound to make her presence felt. It's already made her presence felt, but a lot of work has been done her. We have to compliment her parents. You know, I understand that her father spends a lot of time on her, और इसको उन्होंने बड़ी लिबर्टी दी हुई है to come up with the best, you know, because इसमें आपको पता है कि भी लॉजिस्टिक्स है, गोल्फ कोर्स में आना जाना है, गोल्फ कोर्स के जो डिफरेंट खर्चे हैं सारे के सारे. And I understand that he's doing it with a smiling face. I think I would have loved to have him here and interviewed him here, but somehow right now this is not possible. But in due course next मौका मिला तो वो इंशाल्लाह मतलब ये हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि हाउ ही फील्स. यू नो, आपको पता है कि भी जब बेटी गोल्फ खेल रही हो और कम्पिटिटिव गोल्फ खेल रही हो तो पेरेंट्स की जो जान है ना बस वो अड़ी होती है. इवन दो ना हमदा इज़ वेरी हमना अमजद इज़ वेरी कम्पिटिटिव, येट यू नो आपको पता है कंपटीशन की अपनी डिमांड्स होती हैं. सो वी राइट नाउ वी सी अहमद बेग putting. My God, you know, and that ball right at the very end, you know, अपनी लाइन को ज़रा छोड़ गई. थोड़ा सा पट ज़रा सा मैं कहूँगा मामूली सा ज़रा कम फर्म था. This putting is taking place on the 17th green, so it's interesting. These are the closing moments of the game. अब बारी है पटिंग की हमना अमजद की. ये जब बॉल थोड़ा सा जो है ना अपनी लाइन छोड़ के और होल से आगे निकलता है तो आप यू कैन इमेजिन कि प्लेयर पे कितना अनडिज़ायरेबल स्ट्रेस आता होगा. लेकिन ये चैम्पियंस हैं मतलब दे गेट यूज्ड टू इट. यू नो दे व्हाट the moment that putt leaves the ball leaves the putter, you know, they know कि ये बॉल अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा. बट येट यू नो जो है ना मिस्ड पट जो है वो अपना एक थोड़ा सा जायका जो है ना वो ख़राब करता ज़रूर है, चाहे आप चाहें या ना चाहें. ये और बात है कि कुछ लोगों पे ज़रा ज़्यादा बुरा असर करता है और कुछ लोगों पे मतलब कंट्रोल्ड असर करता है. असर तो करता है कि बट कंट्रोल्ड असर, इतना नहीं कि मतलब उनको वो डिस्टर्ब कर दे
और उनकी गेम अफेक्ट हो जाए. Keep watching. These are interesting moments, particularly golfers, who seek acclaim and who seek what do you call see attainments in the world of golf. उनके लिए ये जो moments हैं ये बहुत ही precious moments हैं. उनकी जो है ना फिज़िकल प्रेजेंस को फिज़िकल जो है इनका स्टांस है उस पर आप फोकस करें और देखें ज़रा कि किस तरह ये उसको हैंडल करते हैं सिचुएशन को. अब ये अपेरेंटली तो पट छोटा था लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है वो नॉट टू हिज डिज़ायर एंड नॉट टू हिज इफेक्ट. One more putt to go. डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे होल से, लेकिन देखते हैं चैम्पियन क्या करता है. वे अगेन अ बेस्ट पट. इसका मतलब कि हमने इस सारे 17th होल की एफर्ट पे जो पटिंग एक्सरसाइज है उसमें हमने कोई सुपर पट नहीं देखा अभी तक. ये Charlie Hull है and he says he's managed to putt, and that means what? That's a smile of relief, huge relief. I think that is a smile of huge relief. He's managed the putt, Acha ji, we're going to take a break now. We thank PTV, we thank the producers Hassan and Usman, and we thank you all for watching. But we'll come back in a little while for the presentation ceremony. So please. Time British Open champion. Please, ladies and gentlemen, show your appreciation for Jan Sher Khan. Mr. Jan Sher Khan, accompanied to the stage by our project director, DHA Multan, Brigadier Kayani. Now, of course, an event of this magnitude would not have been possible without the support of 4 very generous sponsors. And we have some gifts for those sponsors now. So if I could invite, in order please, to make their way to the stage, our very dear sponsors, Habib Rafiq Private Limited, our platinum sponsor, Mr. Iqbal Kakar. If I could now invite Mr. Saheb Bodla of Bodla Builders. If I could invite Muhsin Ali of Bank Al Falah.
And finally, if I could invite Mr. Zaid Mehmood of Bank Al Habib. Thank you sincerely to all four of those gentlemen for help putting this event on and help making it happen. I believe the project director would also like to present our very, very special guest, Jansher Khan, with a special commemorative gift. Now, we also owe a debt of gratitude to the individuals from an organization perspective who helped make this event happen. And we have some commemorative shields to present for those individuals. If I could welcome onto the stage, Peregrine. Mr. Greg Sproul, of course. Great work this week by Greg and his team. If I could invite a representative from Mirador, please, to the stage. And last but not least, a representative from Sirenia. It's fair to say, ladies and gentlemen, that the golf course is sensational. We've all had a chance to get a good look at it now. We've seen how it plays at the top level as well. It's a triumph in golf course design. And we have a special gift for our chief guest, our six-time major champion, golf legend and Rumanza signature course designer, Sir Nick Faldo. So Nick, if I could ask you to remain on stage. We move on, ladies and gentlemen, to the challenge match itself. It was an exhibition of golf of the absolute highest quality. And the challenge match winners, on a score of 14 under par, it's the team of Charlie Hull, Hamza Amin, and Graham McDowell. It was an incredible match, and it went right down to the wire. Please, ladies and gentlemen, show your appreciation for the team that finished on 12 under par. Rafa Cabrera Bello, Hamna Amjad, and Ahmed Beg. If you'd like to come up to the stage for a group photo, please. Proving the robustness of those plates. Very nice.
Some incredible golf out there. We all enjoyed it immensely.